जो हमारी शक्तियां हैं वो निहित हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। ये बहुत कुछ बातें हम आप जनता के बीच में रहने वाले हमारे अभिभाषक साथी, तो हमें समझाना होगा। वो जनता के बीच की कड़ी हैं हम आप, तो संवैधानिक व्यवस्था के आप विद्वान हैं, संविधान के ज्ञाता हैं। मैं संक्षिप्त में ही इस विषय को इसलिए हमारे बीच में शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे समय कम दिया गया है और मैं ग्वालियर से, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है मेरी, एडवोकेट रणवीर सिंह गुर्जर मेरा नाम है। मध्य प्रदेश में हमने कोशिश करके हमेशा स्टेट बार काउंसिल के जय सिंह साहब इंदौर से थे, उनको पहुंचाया, और उसके बाद में विवेक सिंह जो अभी वर्तमान में स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और चेयरमैन भी रहे। संविधान की मूल प्रस्तावना में जो हक अधिकार हैं, हमारी कम्युनिटी उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है और उस अनभिज्ञता को पूरी करने का दायित्व हम विद्वान अभिभाषक होने के नाते हमारे ऊपर हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण परिवेश से हमारा ज्यादातर संबंध है। तो हम संविधान के जो अधिकार हैं, शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको उन लोगों तक पहुंचाएं तो हम समझते हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा। और हम अपने जीवन में अपने जो हमें विद्वान और अभिभाषक का जो हमें हुनर मिला है, उस हुनर को हम वहां तक पहुंचाएंगे तो हमारी सच्ची सेवा और श्रद्धा होगी। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, उनको अपने जन जन तक पहुंचाएं और न्याय दिलाने में, क्योंकि न्याय के लिए हमारी कम्युनिटी बहुत परेशान है। सच्चा न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय के अभाव में हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। न्याय मिलना और न्याय दिलाना ये हमारा काम है, क्योंकि हम वकालत के पेशे में हैं और हम सुदूर पूर्व ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो हमें, हमारे जो कम्युनिटी है जो न्याय से वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको हम न्याय कैसे दिलाएं? तो संविधान के अधिकारों को वहां तक पहुंचाना और सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी के साथ में यदि हम अपने पेशे से उन लोगों के अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, विधिक सहायता पहुंचाते हैं, तो मैं समझता हूं हमारा कर्तव्य, हमारा जीवन सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बात खत्म कर। Thank you so much, Mr. Ranveer Singh Gurjar. Can we have a huge round of applause once again for him? Up next, we have Mr. Yogesh Patil, who will be speaking on future of advocacy. To you, Yogesh, sir. Very good afternoon, respected invitees and my seniors, the father of this program, Kari sir, my seniors and my colleagues. I'm Yogesh Patil from Nasik. My subject is the future of advocacy, challenges and opportunities. Friends, we know that we are in a 21st century and every day we are passing through the cutthroat competition, not because of the cases we have, but the competition of knowledge, competition of skills, competition of the knowledge, what level we are percolating to ourselves, not exactly what others is doing. I believe what I am doing, especially in the field of advocacy. So in the field of advocacy, there are many challenges, scope and opportunities. My fellow colleagues has already spoken since morning, many of the topics.
in my opinion, there are few points where are the emerging areas of practice, which is cyber law. Every day and alternate day we are reading, there are so many cases in the newspaper, especially the cyber law. The place which I belong to, Nasik, I read day before yesterday while before coming here, 43 CR 43 crore rupees was looted by the senior citizens, those who are retired or the, especially those who are businessmen. So, you know what OTP scam, then the merging calls, all these factors are contributing towards the cyber law. Many of the factors are contributing like digital arrest. We know everything. So cyber law is very emerging sector for the advocacy. What we can do, especially many of the literate people also. I was preparing for the UPSC long back, and I have my friends, those who are IAS, IPS and DCPs and all, but one of them has fallen into the trap of cyber law. So then I realize what is the importance of this cyber law. So we should take it very seriously. First, we should make literate to ourselves, then only we can help to the others. Then the intellectual property. This is my area of practice especially. I practice in the IP law. So you know that post-liberalization and recently after COVID, many people, they have started the companies. So startups has there. So each and everybody is there for the trademarks. So they want to register their trademark. So there is a huge scope for the trademark. From last 1.5 year, I completed 36 trademarks in last 1.5 years, 18 months. That too with certifications, and especially 50% of that belongs to the pharmaceuticals, and others are in the automobile and this one, agriculture. Friends, we have a very good scope in the IP law because everybody wants to register their trade name. Even the trade name for the advocates can also be registered. Then we have the environmental law. We know that many conferences are happening in the international level, at the international level, and there are many environmental laws are there. So even if we are throwing our wastages outside of the house, that is also harming to the nature. And one of my Facebook friend, she's environmentalist in Hyderabad, and she has reported one recent case last week only, that there was electronic garbage was thrown in the garbage box, and the person who was lifting that garbage belongs to the corporation, having a blast over there, and he has lost his life. So we need to make awareness to the general people also. Very easily we are throwing the electronic garbage to the garbage box outside of our house or houses. So it is very important how to protect our environment, and we realize post-COVID how the environment is important for us. So this is a wonderful area for the practice, my dear friends. Then healthcare. I work for the healthcare industry for 18 years. And healthcare industry, you know that it is very, very delicate industry and very close to our heart, because we should be healthy. Healthy mind and the healthy body, we always say. So health is very important, and for the health industry, new molecules are coming, contaminations are there. Last couple of months back, there were cough syrup was banned by the Indian government due to the efficacy, and that was cough syrup in USA. And there are 51 companies from Baddi was banned and need to shut down just because of the low quality medicines they are producing. So healthcare industry is one of the
emerging, not, I cannot say the emerging sector, it is there from last 100 years, more than 100 years. But the healthcare industry problems are emerging every day. If you go in a Bombay, Mumbai suburban area, there are people who are manufacturing raw material with the very raw material that is not up to the mark, and they are medicine. So this is, and we have the technology also, as Kari sir has said, AI is a very emerging technology, and we should take a help of the AI, which is not, we can say AI, whatever the draft we are taking from the AI is not acceptable everywhere, but at least we can take a hint from the AI. So my dear friends, this is my, so that much only I can say. So we have a great future in advocacy. There are many branches are emerging. As we know, ENT is there, orthopedicians are there, gynecologists are there. So the same way, we have very different branches of the advocacy as there. So thank you so much for giving me an opportunity. Thank you so much, sir, for keeping us abreast with the recent legal areas of practice. And can we have a huge round of applause for him again, please? Next, we have Mr. Rampal Avana, who will be speaking on judiciary preparation. Like, since a lot of young people are here, I'm pretty sure they would take a lot of keen interest in that. So yeah, to you, sir. धन्यवाद. मेरा नाम रामपाल नहीं है, मेरा नाम है रणपाल अवाना एडवोकेट, और पिछले 15 साल से मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर में वकालत कर रहा हूँ, और 90% मेरी वकालत अपने ज़िले के अंदर ही है. जो मेरा टॉपिक है वो क्लियर है. तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कौन चाहता है कि अपने बच्चों को जुडिशरी में ले जाना? मेरे पास कुछ है उसके लिए. तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि हम जुडिशरी में जाए, सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स. वाई? आपको लगता है एक जज साहब जाते हैं और एक वकील जाता है, आम आदमी जाता है. अगर पुलिस वाला हमें रोक ले तो हमारा क्या रेफरेंस हम देंगे? क्योंकि उस पुलिस के सामने हम मिन्नतें करते हैं. ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? और एक जज साहब जाते हैं उसी चौराहे से, उसे सैल्यूट क्यों? क्यों नहीं हम जुडिशरी टारगेट करते? ऐसी क्या कमजोरी है हम जुडिशरी को टारगेट करने के लिए सोचते नहीं है? क्या प्लानिंग है उसके लिए हमारे लिए दिमाग में? और हम उस प्लानिंग के लिए क्या क्या योजनाएं बनाते हैं? क्यों? हम सबको सोचना पड़ेगा. उसकी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट डे ही हमें टारगेट करना होगा. क्या टारगेट करना होगा? क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तो हम तो जज नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं. और एक जो सब्जेक्ट होता है आपका, जो ट्रांसलेट का होता है, प्रेसिस का होता है, वो सिर्फ इंग्लिश का होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, और जो 100 मार्क्स का होता है. क्यों हम तैयारी नहीं करा सकते अपने बच्चों को? और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट डे ही हमसे पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कहां है. इसको कहते हैं जीके का क्वेश्चन. तो आपको फर्स्ट डे से ही पता है कि जनरल नॉलेज का भी एक पेपर होता है, और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे अपने बच्चे को कराएं. अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप भाग लोगे, जरूरी नहीं है कि आप जुडिशरी का टारगेट कर रहे हो. तो उसके लिए जीके मस्ट है. और इंटरव्यू पे सामने लोग बैठे होंगे, पहला क्वेश्चन उनका इंग्लिश में होगा, और आपका रिप्लाई होगा, सर आई डोंट नो, प्लीज स्पीकिंग टू हिंदी या एनी अदर लैंग्वेज, यू आर कंफर्टेबल. क्यों भाई? हम आखिर सोचते क्यों नहीं है? मैं एक एग्जांपल सेटअप करना चाहूंगा. यहां पर आपके पास 2 चॉइस है, एक गुलाब जामुन है और एक करेले की सब्जी है. आप पहले कौन सी चॉइस करेंगे? मुझे ये बता दो सिर्फ, कौन सी चॉइस करोगे? यदि आपने गुलाब जामुन का सिलेक्शन किया, तो आपका मुंह पहले ही दिन से, उसी समय से खट्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसके बाद करेला है. तो आपको उसी तरह अपनी तैयारी के लिए फर्स्ट टाइम से ही सोचना होगा कि मुझे पहले करेले को ही खाना है, बाद में गुलाब जामुन को खाना, क्योंकि वो उसकी कड़वाहट को खत्म कर देगा. जिस दिन आप जुडिशरी के लिए तैयारी के लिए मन में सोचो, खासकर इंटर्न्स,
जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, किसी अच्छे जज के पास जाए, किसी बेहतरीन अधिवक्ता साथी के पास जाए जो नॉलेजेबल है और जो सच में आपको ब्रीफ करेगा कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। और हमेशा सब्जेक्ट वहां से स्टार्ट करो, हमेशा सब्जेक्ट वहां से स्टार्ट करो जो मैं 5 लाख में 100% जज बना दूंगा, मेरी अच्छी सेटिंग है। कौन चाहता है भाई? आखिर क्यों? 5 लाख का मतलब है कि आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिर्फ, और 1 या 2 अच्छे कोचिंग सेंटर उसको आप सेलेक्ट करके दे रहे हो, और वो अच्छा कोचिंग सेंटर आपको जुड़ बताओगे मुझे कृपया? सांप सीढ़ी का खेल का मतलब होता है कि आप नीचे से चलते हो, लास्ट में किस पायदान पे जाके आपको वो सांप डस लेता है और आप 0 पा जाते हो 1 पे। इसका मतलब साफ साफ है कि यदि आपकी प्रिपरेशन विद टाइम मैनेजमेंट और अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो आपने स्टैंडर्ड तय किया बिल्कुल सही नहीं है, तो आप सांप सीढ़ी की तरह गिर जाओगे। और उसके लिए आपको लगातार मोटिवेशनल स्पीच होती है ना, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और मोटिवेशनल जो स्पीच होती है ना, वो लिमिटेड टाइम काम आती है, 7 दिन 4 दिन, जो रोंगटे खड़ी कर देते हैं। हाँ, मुझे जज बनना होगा, साहब ने ऐसे मुझसे बोला। 7 दिन जरूर होता है, किताबें पढ़ते, 8वें दिन उठा के रख देते। अरे अजीत नागर भाई सेक्रेटरी बन गए, क्या रखा जज वज में? भाई क्यों? भाई क्यों? इस एज में हम लोग लिखते हैं हम बीजेपी के युवा नेता हैं, हम कांग्रेस के युवा नेता हैं। नहीं, हमें लिखना कि हम एडीजे हैं, हमें एडीजे लिखना है बिल्कुल। और उस एडीजे के लिए आप जहां बैठते हो सबसे पहले अपने सामने लिख लो कि मुझे एडीजे बनना, और उस एडीजे की प्रिपरेशन के हिसाब से ही तैयारी करो। तो एडीजे के सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उन बुकों के बाद आपको सिर्फ लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ना होता है। उस लिमिटेड सिलेबस की यदि आपने अच्छे से तैयारी की है, 100% वो एग्जाम पास हो जाएगा। सर जस्टिस साहब, और सेकंड, हम सभी ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब है कि हम फर्स्ट डे से ही मेन की तैयारी करते हैं। मेन क्या होता है? उन क्वेश्चनों का आंसर विद सेक्शन विद जजमेंट हम इस तरह से प्रोनाउंस करके दे कि उस जज साहब जो कॉपी चेक करे, ऑफिसर है जुडिशरी में, हम उन्हें इंफेक्ट कर सके कि हाँ सर हम तैयार हैं और मेरा इनसे बेहतरीन लिखा हुआ आंसर है सर ये। और आपको सर 10 में से 8 तो देने ही होंगे। वहां पर यह नहीं दिखाया जाता कि आप किस कैटेगरी से हो। यदि आपने टारगेट फिक्स कर लिया डेली राइटिंग आंसर शीट का, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है या 10 कोचिंग सेंटर में से
योगेश पाटिल जी बात कर रहे थे, ये नहीं करना चाहिए, आपकी तो शादी हो जाएगी, आप क्या करोगे? मतलब एक बेटी अगर जिद करके पढ़ भी लेती है तो उसको करियर में बाउंडेशन आ जाती है, क्या आप करियर बना के क्या करोगी? आपकी तो शादी हो जाएगी, तो वो अपने करियर क्यों नहीं बना सकती है? उसके अपने ड्रीम्स नहीं होते हैं क्या? उसको अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रही है तो उसके भी ड्रीम्स है ना, वो भी आगे बढ़ना चाहती है, वो भी समाज का नाम रोशन करना चाहती है। तो मैंने भी 7 बार MP सिविल जज दिया है, 2 बार राजस्थान सिविल जज दिया है, न्यायाधीश का एग्ज़ाम दिया है, सिविल जज एग्ज़ाम, और 2 बार सरकारी वकील का एग्ज़ाम भी दिया है। और एज एन एडवोकेट मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में। लेकिन मैंने जो स्ट्रगल देखा है, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव देखा है, गुर्जर महिलाएं तो ठीक है, लेकिन जो महिलाओं के प्रति समाज में, पूरे विश्व में, देश में जो भेदभाव है, वो अगर मिट जाए तो हमारा विश्व इतना, मतलब हमारा देश है जो इतना नाम रोशन करेगा पूरे विश्व में, और विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. It is because of women leaders like you, our community has in the recent past moved forward. For next session, we have Dr. Hansani Khari, who will be speaking on from law, his journey from law to lawyer, becoming a lawyer. Having personally known him for the last few years, he is one of the most charismatic ones, so I'm really excited for this one. Also, Dr. Khari, if you can speak a little bit more about the young people's engagement here, it would be really greatly appreciated. Thank you. Thank you so much. I hope you had a wonderful lunch, right? The conference called for a better engagement, and I'm very pleased to share among you that a lot of individuals that I was assuming that they will somehow miss this conference are very much present with us. Thank you so much for your time and your engagement here, sir. My topic is that one which I derive from my law school days. It's called From Law to Lawyer. Now, my point of inflection is this, that I want to take all the delegates through that how, from learning the concept of law, studying law, and to the time you become an actual lawyer. And I'm not per se saying, referring to a particular indictment in terms of any education qualification. A lawyer, being a lawyer is an open concept that can be taken. Two things is foremost for any first generation lawyer. Now, I'll restrict my
speech with respect to a first generation lawyer's struggle that I myself have faced. Imitate and replicate is the foremost thing that any lawyer must inculcate in their professional journey. Imitate. Imitate your seniors. Imitate the professionals that you aspired to become. Imitate the system. Imitate the entire journey that you are dreaming about. You are attached to a particular law office, you're attached to any chamber. Imitate that how that office works. Imitate how your senior walks, talks, behaves, what he wears, what he eats, the kind of bonhomie he has, the kind of participation he does, the kind of interaction that your senior follows. Then comes replicate. Replicate each and everything that you learn during this process of imitation. Replicate it in your personal appearance. You want to be a lawyer? You must look like a lawyer. Replicate in terms of your behavior. You want to be a lawyer? Behave like one. Replicate. If you want an infrastructure like a lawyer, have one. Have a duly functional office, be it your home place or be it at any other place. Don't just fancy about loud chambers that you can have. Fancy about having a chamber, having a conference that you can come and entertain your clients with. Have an infrastructure regarding how you will digitize your account. We are far, far behind. We've left the entire process of being a lawyer by not being on the train of digitization. Perhaps 90% of lawyers are still consider themselves an old school lawyers. I'm sorry, my learned seniors, my friends, colleagues, and juniors, you are miles behind if you're thinking so. Replicate in the nature of work that you wish to do. Replicate your ideals. Replicate each and every idea of being a lawyer around the participation. The concept that I see, this very conference is nothing but imitation of the existing conferences, imitations of already conducted conferences on these subject matters. But what we have done is of the lawyers from my community. Replicate it, follow it. There are two aspects of any lawyer's life. The one which starts and one that starts after you're done with your law. Everyone, each one of you who's a legal practitioner would agree with me. What we learn in law school, what we learn at our universities is nothing on day one of our litigation. The day we sit, the day we put our first feet in our courtrooms. There's a huge gray area about what we learned during our college days, I'm referring to my law school days, and what we actually practice about. You have to find out that how can you fill this vacuum. That is when the concepts of engaging yourself in better events like that of a moot court. Each one of us who are present here are not in position to participate in moots, but certainly we can be invited as a moot court judges. So make friends with professors. Make friends with academicians. If being a lawyer, I think that I know everything and I don't have a friendship with a good professor or an academic institute, I'm sorry, my friends, with time I will fade away, the clouds fade in the sky. Get invited to events like this. Don't hesitate. It doesn't matter they don't invite you to speak. No issues. Be there. Present yourself. Carry your visiting cards. I mean, it is a little disheartening for me to observe. I've hardly seen any of our delegate exchanging cards. Of course, some of them. But why not? Each one of you, when you are traveling to attend any conference next time, irrespective of what background you are, always carry your visiting cards. You might say hello to a fellow
a fellow lawyer about you saying, but that individual won't remember your name the moment you you put your feet outside the conference room. Leave your mark. Leave your mark in each and every sense that you can, that the person or the individual that you're meeting believes that, yes, you are a lawyer. It doesn't matter how many briefs you have. It doesn't matter how many cases you have. One good brief, one good case will pronounce you a lawyer among your friends, your families, and your bar association that you're practicing at. Now I'll come to the second part of my delivery. The moment you're done with your law, and the moment you sit inside the litigation practice, don't just assume that litigation practice is a 9-to-5 job before any particular court or a tribunal. There is law practice beyond that. Don't just constrain yourself to a practice where you just anticipate that one fine day an individual will come, will hand you over the case file, and you'll appear, you'll draft, and you'll go before any particular bench. Absolutely not. There are things beyond that. For that, you will have to read and read and read. It doesn't matter what language you're reading. It doesn't matter what thing you're reading. Be articulate about it. Try to learn. It comes to your appearance then. As I was referring to the languages. If you practice in a bar where your primary language is Hindi, be proud of it. But then you must also understand and realize that you must be the one who has achieved the fluency in your language. Don't bring your local slangs in your language. Do not bring your citations in terms of a local references. Absolutely not, my dear friends. You want to speak in Marathi, you practice in Marathi, you practice in Kannada, you practice in Punjabi, Gurmukhi. Definitely do it. But then you must know how to write it well. You must know how to speak well. Do not leave any loose ends in your topics, in your language, in your behaviors. Most important thing, before I conclude my session. Consider yourself a lawyer. The person in front of you will treat you a lawyer. Make sure the moment you step out of your houses, your dress talks about that, yes, I'm a lawyer. The moment you sit inside your vehicle and you drive on the road, your driving behavior must replicate that it is a lawyer who's driving. The moment you sit inside your office, or an intern walks in, or an associate walks in, that person must fall in awe with you. That individual must have something to take it from you. Why just you have to superimpose yourself that I'm a lawyer and I'll say whatever it is up to my mark? Make sure that any individual that you meet, make sure that any person that you come across, even if that person doesn't leave a brief with you, but that individual must not go back empty-handed. He must have something about it. Now, lastly, about participation in public life. Each one of you who has a degree in law, each one of you who is a practicing lawyer, who's a legal practitioner, it is your moral, ethical, and dire need to be in public life. Public life doesn't mean contesting elections. Of course, if you're at a stature where you feel you can do it, definitely do it. There's no harm about it. But you must engage in public life every now and then. And this public life engagement should be that of a productive nature, not to harm anyone. So that if some individual, some group of people somewhere are in dire need of any representation, your name should come up. Let's approach the gentleman. That person will take us places. And lastly, challenge. Challenge the authority with which legally you don't approve of. If in your opinion, if it is in your hunch that there is something wrong about this order or a direction or
any authoritative letter which has come before you, why to hesitate? Why to succumb to it? Challenges. As my very learned senior, now late Mr. Soli Sorabji, I had a very brief time to assist him. He told me, and he had nicknamed me Carrie back then, right? He used to say that, Hans, there's always an appeal to prefer. Why do you hesitate? So my dear friends, with this I'll conclude and I'll pass on the podium for the next speakers. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Khari, for indeed providing us with real life, very holistic, practical advice, specifically for young lawyers coming into the profession. Can we have a huge round of applause for him again, please? Next, we have Mr. Gyanendra Singh Awana, who will be speaking on issues surrounding electronic evidence in law. Yeah, to you, sir. Good afternoon, everybody. Honorable Justice Saradhana Sahab, Singh Sahab, Kasana Sahab, Bhati ji, and my friends, ladies and gentlemen. Today in the morning, when I was thinking, what should I speak? So one thought came into my mind that I should touch upon that subject which really needed to be spoken about. After the introduction of new criminal laws, 1st July 2024. The least amended out of these three was Bhartiya Saksh Adhiniyam. But whatever changes were made to BSA, that was major change in my view. People might have thought there are small changes, but no, very crucial changes. So I'll be speaking about electronic or digital evidence. So I may not be covering the entire subject because of the time constraint, but few things I'll definitely be covering. When my friend Khari was referring legal luminary Soli Sorabji, so I recalled one interview of his daughter, which was there on Times Now. Times Now. That journalist asked the daughter of Soli Sorabji whether your father has given you some tips. The only one. What was that? Don't read the law, read the judge. Don't read the law. Law is almost known to everybody, maybe little more or little less. The crucial thing is what really chair wanted
You must know that. Second thing, at the outset, which I would like to share with you, I was in police for 35 years. I am in advocacy for the last 7-8 years. So whoever comes across to me, the first question, उसमें और इसमें क्या फर्क है? When you are a police officer and now you are an advocate, what is the difference? And I always give one liner, and that liner is, पहले फंसाते थे, अब बचाते हैं. So now I start my subject. In fact, two things are very crucial as far as electronic evidence is concerned. Now, electronic evidence has become primary evidence, and electronic evidence has been put in the definition of document. That is number one. Number two, if being defense lawyer, it's very important for defense lawyers. If you don't agree with the prosecution electronic or digital evidence, then burden of proof lies on the defense, which is very crucial. How to do it? So our focus should be only on two things. Number one, now it's not electronic evidence, because if I may go in the history of electronic evidence, after the introduction of Information Technology Act 2000, for quite some time it was secondary evidence. But then famous Anwar judgment came, and all of a sudden it was become electronic evidence, neither primary nor secondary. But now it is proper primary evidence. In itself, it is conclusive, because when if we see the entire British rule, it can be divided into two parts. Before 1857 and after 1857. Before 1857, it was East India Company's rule. After 1857, first war of independence, popularly known, or Britishers used to say it, Sepoy Mutiny. When crown taken, all rule, every function, Queen Victoria took over. So, in second part, all organs of the government were formed. Correct? Civil services came into being. All our 3 laws, criminal laws, came into being. Indian Evidence Act came much later, 1872. And that time, it was almost 150 years. That time, no technology was there. No CCTV, no internet, nothing.
the only evidence was oral evidence and documentary evidence, nothing else. In a span of 150 years, so much of technological development taken place that now, though that technological development has forced to include these development in the legal framework. So the one thing which we should talk about majorly after the introduction of new criminal law is technological addition in every respect. Wherever it was required, be it BNSS, BSA or BNS. Correct? So the first thing was introduction of this technology. So if I may go quickly over these 2-3 things. So the in definition part of BSA, documents definition 21D BSA as known to you all. Now the last line which has been added is that document includes electronic and digital records. Why electronic and digital record? Why we are talking electronic and digital record? Electronic and digital records are different or interchangeably being used. It is creating confusion. When I went through the definition in Information Technology Act, I found very little difference. So some people say whatever is not readable is digital evidence. Whatever is not readable, readable in the sense you have something, some letter. Instead of paper, if it is on the computer in digital form, so it is digital, which can be read. That readable format. And there are several evidences which cannot be read by the person, like data in buffer, data in RAM, or that data for which you need to have an expert to explain. That is electronic. So some very vague kind of differentiation you found around. So therefore, they have put electronic and digital. Somewhere it is said that digital is subset of electronic. Now we come to definitions, illustrations. So in illustrations, the things are made pretty clear. Illustration 6, an electronic record on email, server, logs, documents, on computers, laptop, smartphone, message, website, locational evidence like your geocodes, longitude and latitude values, and voice messages stored in digital form, etc. They have tried to clarify these things. Now, it is not only the computer. Wherever semiconductor is used will be covered in this definition.
So we have to think, where is semiconductor? In your mobile phone, in machines. Even now, if you go in the market, you'll see computerized, computerized pathar cutting machine. Wherever semiconductor is used, that comes in the purview of the definition. So that is the second thing. Where an electronic or digital record is created or stored and such. I am now talking of section 57 BSc. Very crucial point. When we talk of original document in paper, it is just one. You have land revenue record, transaction, registry, popularly known, one paper, original paper, correct? But in electronic and digital record, if some thing is being recorded, say CCTV is here, and having 3-4 locations to store the data. One is here, locally being stored. One is linked with some remote area, maybe some 200 kilometers away from here. So 2-3 places simultaneously, everything is being recorded. Which one is the original evidence? When everything is being recorded simultaneously, which one is the original? So now the law says clearly, original document means recording may be more than one. All 3 places, 4 places, wherever it is being recorded, all are original. So it is again creating a little bit of confusion. Electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed. If you are disputing that electronic record, then being defense lawyer, you have to prove it. Because burden of proof is lying on you. This is what explanation number 5 says. Explanation 7. Even in one computer, you can have more than one storage. A thing may be recorded at 2-3 places. Maybe in primary memory, or you in your disk, or in cloud. All are original. All are original. I am skipping because I am getting a bit delayed. The thing which I wanted to convey you is section 105 BNSS, on which everybody should focus, being defense lawyer. Section 105 BNSS. Now search and seizure by the police should be audio, video, not only video recording, audio also. And not only the search and seizure, but
the seizure memo which is being prepared, that should also be recorded. Who is signing it? That should be recorded. And after the introduction of these three laws on 105B and SS, Bhartiya Nagrik Suraksha Sahita, 3-4 judgment came, where police was pulled up. They were not aware of how to record it. And the same section says, after recording this search and seizure, immediately a copy is to be sent to the magistrate, maybe collector, SDM, or judicial magistrate of first class. How it has to be done? Government has devised an application called E-Praman. E-Praman. So, police officer, that IO, who is taking search and seizure, has to upload the video on that. So, it should be known to you. There may be problem. If somebody is uploading, say after a gap of 1 hour, you can challenge that. Correct? Because the word is immediately Praman is taking only 5 to 6 minute long recording. That is second problem. So you can always go on checking when the video was uploaded, because it is time stamped. It is time stamped. So, and whether the entire thing was loaded or part was loaded, whether search seizure loaded, but somehow that memo, seizure memo recording, when they were preparing and getting it checked clearly. Friends, time is very short, and I wanted to go on and on. Some other day, I'll be talking about it. For the time being, thank you very much. Thank you so much, sir. We certainly loved listening to you. And I mean, for some of the senior colleagues here, it would have been a refresher of college day memories. The clarity of thoughts that you have around the subject, it's really appreciated. Next, we have the chief guest for today, Honorable Mr. Justice V.S. Sardana, who will be speaking on freedom of speech. To you, sir, please. Can we have a round of applause for him? Oh, all right. They can speak from there. Yeah, lovely. I think number must have crossed more than 100. That's a good thing. What I see is really the number of women lawyers is no doubt still low, but not too discouraging. Summing up, Mr. This Rampal Avana, I really liked his aptitude, and I wish that you go on
the way your determination is, if you go on, nobody can stop you from being a judicial officer. I wish you all the best. And he has made a point, and this is what I have been even often telling the young lawyers, that you should see, in our times, when I started practice, having a library was a big issue. Those days, if you subscribe to All India Reporter, SCC Online was in offing. That started from 1969. So I was very near to this 69 and 82. So I offered SCC to be a member of my library. And later on, when in 93, 94, when the computerization started, I was along with one of the lawyer in corporate side, Mr. Parishad in Jaipur, and myself, we two were the persons who subscribed to SCC Online and computerization. So technology as and when take place, you should be ready to acknowledge it. Of course, technology, and what to talk of technology, everything has its good and bad, pros and cons. Take it from basic thing like the cooking fire. You can cook a very good tasty food, as we had a good lunch, and you can also set your house on fire by the same fire. So technology and these new things which are coming in, you should welcome them, and even if you don't welcome them, they will overtake you. So far I haven't seen anyone who could stop the changes and the progress, the way human beings are changing. So to progress, you must have your views always broad. We all are here. Are you all comfortable with my speech, or should I mix it with Hindi also? So one thing I'll advise you, before you take somebody or create an image or want to assess anybody, don't assess just what his perception is in the community or in the mind of the people. You try to know the person through his writings, through his knowledge, not what one thinks about him. I don't have, nobody can have interaction with me, because if I am known throughout the state of Rajasthan or across the country, I can't have interaction with everyone, and everyone can have interaction with me. So when they will assess me only with what are my views, what are my ideas. People know a judge through his judgments. So generally it is said judges speak through their judgments because they don't have any other forum. But I spoke even from the bar side when I was member. I practiced for 25 years before I was elevated to bench. As my friend said earlier, the bar is the breeding ground for bench. So the bar, so will be the bench. So if you want a good bench, then you have to have a good bar. And good bar will be only from the good studies, good learning. So as Gyanandaji said, that don't know law, but know the judge. It's good on the lighter side, but I tell you, you first know the law and then know the judge. When we were practicing, on the lighter side, we used to take, there are two categories of lawyers. One who knows the law, another who knows the judge. So if you want to be a good lawyer, I'll tell you, you know the law and know the judge later. First know the law. And knowing the law is not a very Herculean task, it's not a rocket science. I tell you frankly, law is nothing more than common sense, which is most uncommon, which sounds logical to you, which sounds, say, on any parameter, which is logical
and which is rational. That is law. The lady lawyer, young lawyer, rightly said, when we talk of rights, we ignore the entire half of the population in any community, be it Gujar, Yadav, or Malis, wherever you go. The entire world, when you talk of the progress, you ignore half of the population. And without that half population, this worst half could not have progressed. The first teacher of the child is the mother. So what she teaches the child for first 5 to 7 years, it is how the child shapes for future. So the education of the women, education of the girl is primarily more important than that of a boy. As I know, the lawyer rightly said, in the evening the daughter will be told, don't go out, it's 6 o'clock, be here, because your brother is out. So as you tell them, tell your son also to behave properly. And I don't know why these things happen. Which of the family doesn't have a mother? Anybody who has taken birth must have had a mother, a sister. Then how you can behave in a manner so rude, so illegal, so brutal to another woman in the society? This all happens because we take certain things for granted. We appreciate a lot about the UK and USA. Everybody is now flocking to USA, UK because better chances, better avenues there. Why? Because what we have done to education and the teaching system in this country. When we say something, people would start judging. Oh, he's from that party or he's from that party. See, I'm telling you something from my experience. In this country, after independence, the first generation was educated only in government schools. Private schools were not very much predominant those days. The first generation of common men in this country, that was out of the government schools. My father studied in a government school in a village which had no school higher than 5th standard. After his 5th standard, he had to shift to district Morena, where it was a higher secondary school. From Morena, there was no college. He had to go to Gwalior. From Gwalior, for his PhD, there was no good institutions. After MSc, he submitted his PhD project to world's best agriculture university, Ohio State. And he was given preference there. His project was accepted. And on the basis of government scholarship, he did his PhD from Ohio State Agriculture University, Columbus. So it's not that in those days, the education system was so bad. It was gradually things deteriorated. And ultimately it came to a stage where everything was put into a mess. So after that, what happened now? See, we had very good education institutions of higher learning. We had very good IITs, IIMs after independence. And those IIMs, the IITs, the students from this country, they made their future, they made their mark abroad. But now what is the stage today? 40% of vacancies of professors and lecturers are lying vacant in this IIM and IITs. 40%. Now what kind of students we are going to produce? So these are the things which we must ponder about it. And for progress, I bet and I guarantee you, a quality education is the only roadmap which can take you to success in your life. See, just earning and making money, that's not the purpose of education.
Education means to examine your life. Why you are here? We are in a society. What is going around now? With the advent of technology and internet, now the entire globe is a village. It's a global village we are living in. In our days, I tell you, 1982, 83, when I started, having a telephone, corded one, used to be a luxury. And there was a black on that telephone as good as 35,000 if you want a telephone out of way. And now today, everybody has 2-3 numbers in the cell. Where we have reached from where? This was only technology that has brought in. But what we are doing now, we are regretting now. Now we are trying to find science in Gobar and Gomutra. That has its own, you see. I tell you, to be a lawyer or to be a doctor is not that tough, but to be a human being and to be a good person is even difficult than that. I have seen many doctors, many professors. They might be doctors, they might be professors, but when you talk to them and you examine them on a pedestal of a human being, you find I found them zero, not even better than a laborer. A laborer had better aptitude about life and society than a doctor or a professor. So unless you read, when I study, see, I did my BSc because my father wanted to be a scientist as he was. But for some reasons, when I examined his way of working and his career, service career, and what kind of problems he faced, I decided never to be in a government service. So after BSc, I switched on to law. And my father was very angry that day. In the evening at dinner table, when I informed him, now I'm going to put an end to my studies in science, he was very angry. But then he asked me, what are you going to do then? Unless you study, you can't make life. No doubt. I'm going to study, but I'm not going to study science. I'm going to study law. I'll be a lawyer. I'll work. And I want wages and result according to my labor I put in. क्योंकि मैं उसमें भरोसा नहीं करता कि कर्म किया जाओ, फल की चिंता मत करो. मुझे तो फल की भी चिंता है. और अगर आप सही फल करेंगे, अगर सही कर्म होगा, तो आपका फल आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो डेफिनेटली आपके पास आएगा. अबाना ठीक कह रहे थे, आप अपने आप को टॉप के ऊपर रखने के चलिए. लॉयर तो आप हैं ही. Why can't you be a judge? And even if you don't want to be, then try it out. And even if you are successful, you can resign and say, and you can be an example to others. Say, look, I was selected, but I have resigned and I am practicing as a lawyer. But if you can't have it, then don't say, I don't want to be. वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं. तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है. आप चाहे ट्रैश पढ़ लीजिए, कानून की किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपको आगे जाना है, वॉट एवर यू फील्ड टेक अप. हमारे यहाँ एक वो रावत मिष्ठान भंडार वाला है, अगर आपने नहीं जाना होगा तो आज मैडम the one who is hosting dinner today, I'll ask him कि वो उनकी कचौरी जरूर खिलाएं आपको. उसकी फेमस कचौरी है मावे की, रावत पोलो विक्ट्री. तो वो कचौरी ऐसी बनाता है कि उसके मुकाबले की कचौरी कोई नहीं बनाता. तो मैं आपसे कहना वो चाहता हूं कि आप जो भी काम करें ऐसा करिए कि फिर आपके मुकाबले का कोई नहीं हो. तो जब आप वकील बन के खड़े हों कोर्ट में, तो ऐसा वकील खड़े होकर करिए कि जो आप बोलें, जो आपने जज को कहा,
उसके आगे कुछ नहीं है और उससे पीछे कुछ नहीं है। वही अल्टीमेट लॉ का इंटरप्रिटेशन है जो आपने बताया है, और वही लॉ है। जज आपको देखिए, हर लॉयर जो है आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सब लॉयर पढ़ते हैं। फिर आप में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है जिसके लिए जज आपको सुने? वो एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए, और वो एक्स्ट्रा आपके पास आता है आप एक्स्ट्रा रीडिंग करने से। आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किताबें पढ़िए, आप ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर किताबें पढ़िए, आप सोसाइटी के अलग अलग सोसाइटी के स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में पढ़िए, आप सोशियोलॉजी के ऊपर पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़िए। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो कि इररिलेवेंट हो। हमने उसको बांट दिया, ये साइंस स्ट्रीम है, ये लॉ स्ट्रीम है, ये आर्ट्स की स्ट्रीम है, ये कॉमर्स की स्ट्रीम है, लेकिन एक दूसरे से इतना इंटरलिंक्ड हैं कि हम एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने जब साइंस करके बाद मैं कॉलेज में गया तो, और मेरे जो दूसरे कलीग्स थे जो आर्ट्स में थे, कॉमर्स में थे, जब वो बाद उनसे इंटरेक्शन होता था मुझे लगता था मैंने कि जिसने साइंस नहीं पढ़े उसने तो कुछ नहीं जाना ज़िंदगी में। उसको यही नहीं मालूम कि हम कैसे आए इस दुनिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेल कैसे होता है, हम कैसे पैदा होते हैं, हमारा शरीर कैसे बनता है, डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे होता है। एक सेल होता है, एक सेल से हम बनते हैं, बनते बनते हमारे कुछ उसी सेल में से कुछ हड्डियाँ बना देती हैं, कुछ हमारी स्किन बनाती है, कुछ हमारे नाखून बना देते हैं। सच ए वंडरफुल जर्नी, क्या साइंस है। और इन आदमी को यही नहीं पता ये शेक्सपियर को भी पढ़ के खुश हो रहे हैं, या फिर कॉमर्स वाले जो है वो अकाउंटिंग को लेकर खुश हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने लॉ पढ़ा, जब सोशियोलॉजी पढ़ी, जब इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया को जाना, तब मेरे समझ में ये आया कि सिर्फ साइंस ही नहीं, अगर आपने कॉमर्स नहीं जाना तो कुछ नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गरीब है, और गरीबी सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में, चाहे कहीं भी चले जाइए। तो इकोनॉमिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होता बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्ट्स में हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अरे जिन्होंने किया वो कर गए, आप क्यों पढ़ रहे हैं उसको। पढ़ते पढ़ते एक बार अंबेडकर जी का एक कोट पढ़ा, दोज हु डोंट नो हिस्ट्री दे डोंट क्रिएट हिस्ट्री। पहले तो मैंने पढ़ा कोट, मैंने कहा ये इतनी गहरी बात कही किसने। बाद में देखा तो डॉक्टर अंबेडकर ने। जब स्टूडेंट था लॉ का तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे अंबेडकर, इतना ही पढ़ा। लेकिन बेंच में आने के बाद थोड़ा टाइम मिला तो अंबेडकर को जितना पढ़ता गया उतना अंबेडकर में डूबता गया। एंड अल्टीमेटली मैंने ये जाना कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति इस देश में तो नहीं हुआ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति का अनावरण किया उस टाइम पे बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का असेसमेंट किया कि इस यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़े हुए लड़के हैं, हमारे यहाँ से जो बच्चे आगे गए, उनमें से ऐसे कितने हैं और कौन हैं जिन्होंने ह्यूमन लाइफ के ऊपर इतना असर डाला हो, उतना इम्पैक्ट किया हो, जिसको लोग बाग आज फील करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर वॉज एट नंबर 1। उनकी स्पीचेस पे, उनकी राइटिंग्स पे आज भी वहाँ रिसर्च चलती है। सोसाइटी को आज भी उनके नज़रिए से देखा जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके इकोनॉमिक्स में डीएससी किया, डॉक्टर ऑफ साइंस, नॉट ओनली पीएचडी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सिर्फ पीएचडी थे, ही वॉज डीएससी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1923, 2023 already gone, 102 years, no Indian has been able to achieve that distinction. उसके कितने क्राइटेरियाज में आप जाएंगे। उनकी एक स्पीच है जिसको पढ़िएगा जब भी आपको टाइम मिले। अब तो आप लकी हैं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश,
ये कोई किताब नहीं है, इसको बाद में उन्होंने छपवा लिया था। इनफैक्ट ये एक स्पीच है जो 1936 में उन्होंने लिखी थी, क्योंकि हमारे समाज में हम किसी भी चीज़ को जो बुरी सी बुरी हो उसको अच्छा नाम बहुत अच्छी तरह दे देते हैं। हमें औरतों को, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है तो उनको कहेंगे अरे हमें उनकी बहुत चिंता है, घर में नहीं है, आप सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि उनको बाहर जाने से रोकना है। लड़की को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, शादी हो जाएगी। वो बच्ची सही कह रही थी, अरे शादी हो जाएगी तो इसका जीवन खत्म हो जाएगा, शादी के बाद तो उसका जीवन शुरू होगा, तो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो क्या बच्चों को क्या पढ़ाएगी लिखाएगी। तो वो भी यही काम करेगी कि अपने बच्ची को आपने नहीं पढ़ने दिया, वो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ने देगी, क्योंकि उसकी समझ में तो उसको ये जो बताया गया है वही सही है। और वैसे ही एक के बाद एक हमारे जनरेशन अनपढ़ होती जाएंगे। 1848 में ज्योतिराव फुले जो माली समाज से आते थे, उन्होंने पहला स्कूल खोला 1848 में, वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए। वो एक मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए थे। अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए तो वहाँ से उनको कहा कि भाग जाओ यहाँ से, आपकी वजह से हमारा ये जो सारा कार्यक्रम है वो दूषित हो रहा है, क्योंकि तुम शूद्र हो और शूद्रों का हमारी शादी में यहाँ कोई काम नहीं है। उन्होंने आके अपने पिताजी से पूछा कि ये शूद्र कौन होते हैं। उन्होंने उनको सारी स्थिति बताई, वर्ण व्यवस्था बताई। तभी उन्होंने सोच लिया कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन मुझे इतना पढ़ना है कि ये जो तथाकथित ज्ञानी हैं इनसे ज़्यादा मैं पढ़ सकूँ। पढ़ाई उन्होंने की। स्कूल पहला बच्चियों के लिए खोला। उनकी उम्र उस वक्त 21 साल थी। समाज के ठेकेदारों ने उनके पिताजी को समझाया कि ये देखिए अधर्म का काम कर रहा है, धर्म के विरुद्ध है, शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा कि ये धर्म का काम विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उसको बंद कर दो। वो नहीं माने। तो फिर अंत में उनके पिताजी को ये कहना पड़ा कि ज्योतिराव या तो स्कूल बंद होगा या फिर घर में रहोगे। तो ज्योतिराव फुले ने 21 साल की उम्र में अपनी पत्नी से कहा कि हमारा वक्त इस घर में पूरा हो गया, चलिए यहाँ से। वो घर छोड़ के चले गए, लेकिन स्कूल बंद नहीं किया। सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका थी जो घर से पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी तो 2 साड़ी लेके चलती थी, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, क्योंकि धर्म विरुद्ध काम कर रही हैं। तो वहाँ जाके साड़ी बदलती, बच्चों को पढ़ाती, फिर वही साड़ी बदल के पहन के फिर घर आती थी। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में, उन्होंने जो है शूद्र समाज में पढ़ने की अलग जलाई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके नायक कौन है और हमने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, आज हम कहाँ हैं। माता पिता का कहना माना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हर पिता अपने हर बेटे को अपने जो कहा वो मान रहा होता तो आज हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा जो है अंग्रेजों की खिलाफत करे और फांसी चढ़ जाए। आज भगत सिंह की बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन भगत सिंह के बारे में पढ़ता कोई नहीं है। आप ऐसे यहाँ कितने जिन्हें भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ी है? भगत सिंह का नाम आता है तो सिर्फ यही है कि एक आदमी बंदूक लेके निकला है और अंग्रेजों को गोली मारने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल गलत इमेज है। पढ़िए जरा आपने उसने क्या लिखा है। हम जिस तरह से आज यहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे से नफरत करते हैं, उन्होंने लाहौर में एक अपनी जो भारत महासभा थी उसका आयोजन किया और उसमें एक तरफ झटका मीट रखा, दूसरी तरफ आपका वो जो दूसरा होता है हलाल, जिसके ऊपर काफ़ी झगड़े होते हैं, और दोनों को एक ही देग में पकवाया। हिंदू मुस्लिम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब ने बैठ के उसी में से जो है भोजन किया, सब ने वो खाया। तो उसमें झटका भी है, उसमें हलाल भी है, और किसी ने इसका ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो उनका यही कहना था कि जितने भी हम भारतीय हैं वो सब धर्म से ऊपर उठ के एक दूसरे के भाई बहन हैं। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में तो फांसी हो गई थी उनको।
16-17 साल की उम्र में वो क्या करते थे, उनकी क्या सोच थी। उन्होंने एक किताब लिखी, जो कोई मंदिरों में न बजाए, जो तथाकथित धार्मिक नहीं हो, तो मुझे उनको राय देनी है वो भगत सिंह को जरूर पढ़ लें, क्योंकि भगत सिंह से ज़्यादा नैतिक तो कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सर झुकाना, घंटी बजाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन क्यों नहीं झुकाना है, क्यों नहीं बजानी है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, उन लोगों से बहस करनी पड़ेगी, और ये जवाब देने के लिए, ये बहस करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीवन में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में आपको अगर अपनी उन्नति करनी है और सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ पढ़ाई ही एक रास्ता है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम किसी भी भाषा की ये नहीं कहते ये अच्छा ये बुरा है। भाषा का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक है, वो है कम्युनिकेशन का माध्यम। हम अपनी बात को कह सकें, दूसरा हमारी बात को समझ सके, चाहे वो आप लोकल भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो। लेकिन आपको ये देखना है कि आज विश्व की भाषा क्या है। लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश टुडे। चाइना ने इतना आगे प्रोग्रेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से जितने भी साइंटिस्ट हैं वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और वही इंटरेक्शन कर करके आज वो कई साइंटिस्ट बाहर के, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं, जापान के हैं, जर्मनी के हैं, उनसे इंटरेक्शन शुरू हो गया। इंटरनेशनल जितने भी नेचर के बुक्स हैं जिसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट आपके डिस्कवरीज, लेटेस्ट इन्वेंशंस जो छपते हैं, वो सब इंग्लिश में है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इंग्लिश में आते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएंगे, कि जजमेंट आपकी समझ में नहीं आएगा, तो जो चीज़ आप नहीं समझेंगे तो जज को क्या खाक समझाएंगे। इसलिए इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश खुद पढ़िए, खुद समझिए, और अपने बच्चों को तो जरूर समझाइए। मैंने कई नेताओं को जानता हूं, मैंने कई नेता देखे हैं जो हिंदी का तो नारा लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी के पढ़ने के लिए यूएस भेजते हैं। धर्म के नाम पे जो, जहाँ पे चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, जो सारा पैसा एक समाज से इकट्ठा आ रहा है धर्म के नाम पे, आप पता कर लेना उनके बच्चे यूएसए या यूके में पढ़ रहे होंगे। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ये ज़रूरी है आपकी प्राइमरी लेवल पे। देखिए, बच्चे को जो चीज़ समझ में नहीं आती, उसको, बच्चे को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ हम बड़े हैं, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम उसको छोड़ देते हैं, कह रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बस का काम नहीं है, छोड़ दीजिए। तो बच्चा अगर 4-5 साल का है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो उसको छोड़ेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन होगी जब पढ़ाने वाला ऐसा होगा कि बच्चे को उसकी उम्र के साथ से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से अगर पढ़ाया जा सकता है तो वो उसका मन उस चीज़ में लगेगा, वरना उसको छोड़ेगा। इसके लिए मैं आप सबको बता देता हूँ, एक फ्री साइट है, बच्चों को जरूर बताइएगा। एक मिस्टर सलमान खान हुए थे, एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे सलमान खान थे जो यूएसए चले गए, और यूएसए जाके गरीब घर से थे, तो उनका यही पर्पस रहा कि मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ तक आ गया, मैं पढ़ लिख गया, तो कम से कम मेरे समाज के या पूरे देश के जो भी, किसी भी समाज के गरीब बच्चे हैं वो अच्छे पढ़ लिख जाएं, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए। तो उसने एक यूट्यूब पे अपने कज़िन्स को मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करना लेक्चर देके यूट्यूब पे भेजना शुरू कर दिया। बिल गेट्स ने देखा कि उसके बच्चों की ग्रेड्स एकदम से इम्प्रूव हो गई, तो
तो उसने बिल गेट्स ने अपने बच्चों को बुलाया, पूछा उनसे कि तुम्हारे ग्रेड्स ऐसे इम्प्रूव कैसे हो गए। तो बच्चों ने बताया कि हम यूट्यूब पे ये मिस्टर खान हैं, सलमान खान, उसके लेक्चर्स देखते हैं, उससे हमारे समझ में आता है और हमने इम्प्रूव किया है। बिल गेट्स ने सलमान को फ़ोन किया तो उसने अपनी स्पीच में कहा, सलमान ने, कि मुझे तो दिन में तारे नज़र आ गए कि बिल गेट्स ने फ़ोन करके पूछा है कि बिल गेट्स वांट्स टू टॉक टू यू, व्हाट टाइम विल बी कन्वीनियंट मिस्टर सलमान। तो सलमान ने बात की, बिल गेट्स ने कहा कि ये आपका पर्पस है एजुकेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड एनीवेयर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत अच्छा है एंड आई वांट टू फंड इट। बिल गेट्स ने उसमें फंड किया और उसने एक ऐप बनाई है, खान एकेडमी। दिस इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन योर मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ऑन वट एवर इंस्ट्रूमेंट यू वांट टू डाउनलोड इट। और एक आता है खान किड्स, विच इज़ फॉर द स्मॉलर चिल्ड्रंस, बेबीज़। तो इनको दीजिए, क्योंकि ये जो लेसन्स तैयार करते हैं उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक डॉक्टर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जो बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि किस उम्र साल, कितने साल के बच्चे को कौन से स्टैंडर्ड के लेसन को किस तरह से पढ़ाया जाए तो वो आसानी से उसको समझ सकेगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि कुछ भी हुआ, एक टीचर भेज दिया, बीएड है, बस हो गया। तो ये फ्री एप्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, इससे बच्चों को आप पढ़ाइए। खान एकेडमी में तो आपके साइंस का जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए भी लेसन्स तैयार कर रखे हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सिलेबस के हिसाब से और भी ज़्यादा उसको रिफाइन कर रखा है। उसने अलग से कॉलम रखा है फॉर इंडिया। तो इन ऐप्स की मदद से अपने बच्चों को एम्पावर कीजिए, क्योंकि सरकारों से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ नियर फ्यूचर में क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ हो पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों को दीजिए, टेक्नोलॉजी को आप खुद लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से डेवलप हो रही है, इससे आप खुद भी जान सकते हैं, बच्चों को भी बढ़ा सकते हैं। मैंने तो खुद इसमें जो है एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जब चैट जीपीटी आया था। मैंने फ्रैक्शंस का जो है एक क्वेश्चन डाल के देखा, मल्टीप्लाई 1/8/155 एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। चैट जीपीटी ने उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बता दिया। तो जब ऐसी चीज़ें हमारे पास आज अवेलेबल हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो हमें स्कूलों के चक्कर में और उसके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इन चीज़ों को अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जहाँ भी आप लाइब्रेरी बनाते हैं, जहाँ भी आप, क्योंकि आप एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स ऐसे हैं, ऐसा वो कंपोनेंट है जो सोसाइटी में हर वॉक ऑफ लाइफ से इंटरेक्शन होता है। आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, आपके पास क्रिमिनल्स भी आएंगे, आपके पास हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आएंगे। तो इन चीज़ों को आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, आपका परिवार का डेवलप हो जाएगा, परिवार डेवलप हो जाएगा, आपकी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, आपकी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी तो आपका स्टेट डेवलप हो जाएगा, स्टेट डेवलप हो जाएगा तो नेशन अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। इसलिए बुद्ध का जो कहना था कि आपो दीपो भवो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। आप अपने आप को एम्पावर कर दीजिए, अपने आप सोसाइटी एम्पावर हो जाएगी, अपने आप देश एम्पावर हो जाएगा। ट्राई टू हैव अ ब्रॉड बेस अंडरस्टैंडिंग। किसी के भी बारे में, आप किसी से अगर कोई बिजनेस करते हैं या आपको मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है और वो आपको डॉलर में पैसा देता है, तो आप उसका केस नहीं लेंगे या डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो इंडियन मनी रुपये ही लूँगा। आप तो डॉलर भी ले लेंगे, येन भी ले लेंगे, दिनार भी ले लेंगे, जो भी मिलेगा वो लेंगे। तो अच्छी बातें चाहे वो कुरान से मिले, चाहे बाइबल से मिले, चाहे ज्योतिराव फुले से मिले, चाहे डॉक्टर अंबेडकर से मिले, चाहे विजय सिंह पथिक से मिले, चाहे सरदार पटेल से मिले, कहीं से भी मिले, उनको ले लीजिए, क्या बुराई है उसमें। आपके नायक कौन है इनको पहचानना शुरू कीजिए। आप विजय सिंह पथिक को पढ़िए, सरदार पटेल को देखिए, ही वॉज अ लॉयर बेसिकली। कोई केस आर्ग्यू कर रहे थे, साथ में एक टेलीग्राम आया, जेब में रख लिया, केस में बहस करने के बाद, क्रिमिनल केस था, एक्विट करा लिया अपने क्लाइंट्स को, उसके बाद में जाके जेब में हाथ से निकाला टेलीग्राम,
पढ़ा तो पता चला उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। वो डेडिकेशन रखिए। इसलिए जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए। अगर आपने कानून की पढ़ाई चुनी, आपने कानून में अपना करियर चुना है, तो मेरा कहना है आप यू स्लीप विद द लॉ, यू वेक अप विद द लॉ, यू ईट लॉ, यू ड्रिंक लॉ, वट एवर यू डू सी अ लॉयर्स एंगल इन दैट। तब आप जो है अच्छे लॉयर बन पाएंगे। और जैसा रणपाल ने आपको एडवाइस किया है, अच्छी स्टडी कीजिए। जुडिशल ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं, हायर जुडिशल के एग्ज़ाम हैं, वो दीजिए, उनकी तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे जज नहीं बन पाए या जज भी नहीं बन पाए तो अच्छे वकील ज़रूर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं भी देता हूँ आपको। टाइम कॉन्स्टेंट है, बाकी मैं आपसे और भी विषयों पे बात करना चाहता था, क्योंकि आपके प्रोफेशनली तो जो कुछ आप जानते हैं, मिस्टर रवाना तो अपना मुझे बताया गया यूट्यूब भी चैनल भी चलाते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू हिज चैनल। आपको डिजिटल एविडेंस के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। और हमें अपने आपस में जो है, आप इतने लॉयर्स हैं, कौन किस फील्ड में है, आपस में जो है एक स्टडी सर्कल बना लीजिए। किसी भी टॉपिक पे जो आपका एक्सपर्टीज़ है, मिस्टर हंस को अगर कॉर्पोरेट में है, आप कॉर्पोरेट बारे में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक अपना स्टडी सर्कल बना के संडे को, सेकंड सैटरडे को अपना एक टाइम रख लीजिए और 1 घंटे का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाए, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाएं, वो एड्रेस कर लें। व्हेन आई वाज अ लॉयर आई स्टार्टेड दिस कंसेप्ट। उस टाइम में तो ये मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो मैंने एक स्टडी सर्कल बनाया। तो उसमें हम जाके, मैंने कहा वैसे तो जज हमें कैसे जानेंगे, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हमारा एक ग्रुप था करीब 20-25 का छोटा सा। तो उस ज़माने में उसमें से हम 4 लॉयर्स जो बेंच तक पहुंच गए, तो हमने ये किया कि जो जज जिस फील्ड का हुआ करता था, जैसे सर्विस लॉ में पहले यहाँ पे मिस्टर जस्टिस S.C. अग्रवाल थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो हमने एक स्टडी सर्कल बनाया। स्टडी सर्कल में हमारे जो क्लब था उसके मेंबर्स थे 20-25। तो एक जज को जो हम जाके अप्रोच करते थे सेकंड सैटरडे के लिए, उनको हम बुलाते थे कि सर वी वांट टू हैव ए इंटरेक्शन विथ यू एंड विल लाइक टू लर्न फ्रॉम यू, क्योंकि आप सर्विस लॉ में बैठे हुए हैं, सर्विस की बेंच है आपकी, तो हम चाहेंगे कि सर्विस लॉ में आप हमको एनलाइटन करें। और हमारे जो ग्रुप के कुछ ब्रदर एडवोकेट्स हैं जो सर्विस लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी क्वेरीज आपसे पूछ लें। वो आते थे हमारे साथ, 1-2 घंटे बैठते थे और हम उनसे पूछते थे कि व्हाट ए जज वांट्स फ्रॉम ए लॉयर। तो आपस में इंटरेक्शन होता था, वो बता देते थे कि हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, हाउ ए लॉयर शुड आर्ग्यू, हाउ ही शुड कम, हाउ ही शुड पुट अप हिज केस। नेक्स्ट सैटरडे को हमने क्रिमिनल साइड में जो जज साहब बैठे हैं उनको इन्वाइट कर लेना है। उसके बाद अगर कोई कॉर्पोरेट साइड में जो है, पहले कंपनी जज हुआ करते थे, उसके बाद अब तो NCLT आने के बाद में बंद हो गया, तो पहले कंपनी जज हुआ करते थे, उनको इनवाइट कर लेते थे। तो वो इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। हमेशा अपने से जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनका साथ रखिए एंड कीप अ गुड कंपनी, क्योंकि वो मेरी नानी कहा करती थी बहुत उस टाइम पे। तो अब वो ऐसा है कि आप जैसे कंपनी में रहोगे वैसे ही रहेंगे। तो आपकी कंपनी अगर अच्छी होगी, सो कीप ए गुड कंपनी। वो कहावत है ना कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक इट टुगेदर। तो अ मैन इज ओन्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। कीप ए गुड कंपनी एंड उसमें आपके सीनियर हों ज़्यादा बेटर है। मैं जब BSc में था तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स MSc वाले होते थे। उसका रीज़न यही था, मैंने कहा जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो तो उतना ही बताएंगे जो मुझे पता है। मुझसे अगर ज़्यादा जानना है तो अपने से हायर क्लास वाले के साथ बैठो। तो एज ए लॉयर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानना है तो आपसे जो सीनियर हैं, जिनकी अगर आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है तो आप 20 साल वाले के साथ बैठिए, तो यू विल हैव एडिशनल 10 years एक्सपीरियंस in the 11th year only. So you will be after 2 years equivalent to 20 years practice. तो ये रखिए। देन हमारे जो एक गुरु थे वो कहा करते थे कि ड्रेस वेल एंड एड्रेस वेल।
So, as Mr. Khari mentioned, so when you are a lawyer, you should behave like a lawyer. You should look like a lawyer. Your behavior, your disposition should be like a lawyer. So dress well and address well. तो आपका जब तक ये सारे पोजीशंस में आप अपने क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं लाएंगे, until you will not be able to make a mark. और जहाँ भी जाते हैं, देखिए दुनिया में एक जीवन मिला है. अब पता नहीं आगे जन्म है या पीछे था नहीं था, मैं तो इसमें नहीं मानता. आपका यही जीवन है और ये जीवन अगर मिला है तो कहीं निशान छोड़ के जाइए, तो आने वाली जनरेशन्स आएँ तो वो देखें कि हाँ यहाँ से कोई गुजर के गया है. तो एक वो शेर जो अक्सर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. तो आप अपने आप को इतना एम्पावर करिए. आप पढ़ते हैं तो इतना पढ़िए कि आपसे बहस करने वाला ही कहेगा कि बताइए आपके क्या ओपिनियन है, मैं वही मान लेता हूँ. थैंक यू अलॉट. थैंक यू. Thank you so much, Honorable Mr. Justice Saradhana, for blessing this ceremony with your words of wisdom. Certainly this conference, or any conference like these, might not be sufficient to gather all the knowledge that is present here with the kind of legal numeraries that are present, but we can only try. And I should really appreciate how beautifully you have captured, right from themes like annihilation of caste to why I'm an atheist in a very nuanced manner. So can we have a very huge round of applause again for him and the entire line of speakers we have today. Now I would like to request Dr. Khari to present the vote of thanks along with facilitating some of the members of the bar who were left earlier. Yeah. Thank you, Dev. Thank you, all the delegates. It is indeed very heartening to observe that all of you have, given away your entire day to this success of this conference, which means a lot. And it is very pertinent to mention, I must say it with an open heart, I was testing waters today. I wanted to see that how many delegates register and how many delegates are brave enough to give their time to this cause by staying all the way till the conclusion of this conference. And I, with wholehearted, along with my team and my organizers and my other people who have supported me, I would like to extend thanks to individually each and every delegate who's sitting here till this time, who has given his assurance, his time and his dedication towards the upliftment of our community. Thank you so much. Now, I would like to thank Justice V.S. Saradhana for gracing this occasion, along with the guest of honors present with us, with seniority, Mr. Gyanendra Singh Avana, advocate, Advocate Mr. Rajpal Kasana, sir, Professor N.L. Gurjar, sir, and our dynamic and very charming lawyer and individual, a very pleasing personality from Punjab and Haryana, Chaudhry Karamjeet Singh, sir. Thank you so much for your time. Now, before we conclude this session, another 5 minutes of engagement is left with us before we move towards the high tea. There is a special mention that I would like to make for the team. I would like to call upon Mr. Ashok Nagar, Mr. Bharat Bhushan Chaudhary. Please join me here so that each one of you can have a look at them and thank them for the entirety. Along with this, I would like to call upon my team members, Advocate Dev Nagar, Advocate Dilip Chetan Khari, Advocate Abhinav Singh, my two associate interns, Rahul Hakla and Vijay. Where's Vijay? Please call everyone, right? That way. Now, sir, I would like to request all the guests that there are certain delegates which were left behind for the felicitation. And amongst and foremost of them is Advocate Jagdish Singh Bedam. I would like, sir, to please grace the occasion and by delivering the memento to Advocate Jagdish Singh Bedam. I think all of you can go there and perhaps, right, if you, all the guests
And I would request the cameramen to kindly go towards all the chief guests and the guest of honors. We would be doing this felicitation towards that side so that every delegate has a personal photograph with all the guests. Please, first, Advocate Jagdish Singh Bedam, please. Sir, you will have to excuse Advocate Jagdish Singh Bedam for his attire because I've learned that even till last 4 a.m. in the morning, he was busy shuttling the delegates for their accommodation and likewise. So, thank you. Now, I would request, there's a special mention of a few members who are part of the audience but are not the delegates somehow. Advocate Mr. Manglaram Khatana, sir, he is a very seasoned and a very senior fellow. Advocate Manglaram Khatana has a landmark judgment to their name. I must say, sir, please come towards the dais. You must, it is my duty to tell you that in the year 2009, Advocate Manglaram Khatana filed a petition before the Rajasthan High Court against the Bar Council of Rajasthan, which led to the permission and allowing the individuals above the age of 45 to get themselves registered as lawyers and practice before the law. So a big round of applause for Mr. Manglaram. Thank you so much. Now, thereafter, I would like to request Mr. Vijendra Khari, Chairman. Sir is a very brave social worker who in the state of Rajasthan has contributed his last 10 years towards the dissemination of contrast of lawyers, usually known as Lor and Khari, Khap, Tad. And he has been successful enough in propagating that Khap, Tad, Jodo and Gujar Jodo so that all the Gujar communities come into unison in that respect. Definitely. Now, apart from this, Advocate G.S. Thun, who has joined us from all the way from Chandigarh, sir, I would like you to kindly proceed towards the chief guest and the guest of honors. Advocate G.S. Thun, please, sir. Lovely. Now, apart from that, there are certain delegates. I'll be taking their names. Those delegates who have received their mementos and their pictures were not clicked, so you may kindly proceed towards that. We will first begin with all the lady member delegates that we have with us. So I would request, I can see lady member Romika Gurjar standing behind the judges. Please, ma'am, a photograph with all the judges, along with your mementos that you have. Right. How you can hold on for the timing so that, that way. So these photographs go a long way, definitely. Thank you, ma'am. All the lady members sitting on my right-hand side, please proceed towards the judges' podium. Advocate Dimple Chaudhary. Certainly, we would, sir. There would be group photos for everyone also, but it has to be a one-by-one thing, sir. Advocate Sheetal Chaudhary. A big round of applause for the lady members who have braved to be here, sir. Advocate Dugar, Ms. Dugar. Yes, please. Thank you. Advocate Sheetal Chaudhary from Maharashtra. Kindly correct me if I'm mispronouncing or saying the wrong names. Please. Thank you, ma'am. Advocate Anju Gurjar from Rajasthan. Advocate Anu Raval.
Advocate Sonam Chokar, right? Sorry? Advocate Vimlesh Nagar. We've completed. Now, I would request all the delegates whose photographs have not been clicked along with the chief guest to kindly proceed the chief guest dais one by one. And thereafter, kindly move towards the pre-function area for high tea. We would be having a group photo thereafter. So all the delegates sitting on my right-hand side, starting from Mr. Nagar, please. So that we have a roundabout thing, one by one. Advocate Pradeep Nagar, please. Dev, may I request all the delegates on the left-hand side to kindly set aside for the pictures and to come one by one. No, sir. No, bilkul nahi. Next. Advocate Kapil Bhati. Lalit Bhati, I'm sorry. Advocate Jagdish Prasad, if I'm right. Thank you, sir. Advocate Ashish Kumar, Ashish Gurjar, sir, from Rajasthan High Court. Advocate Rakesh, sir. Dev, can you please? So now I request each one of you to gradually come so that we can do the alignment and all of us can have. And lastly, all the speakers who were there in session 2 are requested to kindly come together for a group photo with the chief guests. All the speakers also. Once we are done with this thing. Now I would like to request Advocate Shanta Ram Mahajan, sir, to kindly join the chief guests. Now, just bata rahe, you keep doing the names and other things, right? Eventually, right? मैं one by one करके photographs के लिए. Dilip, you go from this side. Ask everyone whose photos is not clicked. You kindly confirm. Those photos are clicked. Kindly ask them to sit. Right? That way. Likewise, even I know. That way. हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे. मैं एक बार ऐसे ना photos में conclude करा दूँ. जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना सबकी aspiration. Advocate Shantaram Mahajan sir has come all the way and travelled all the way from Maharashtra. Yes, sir. Definitely. Right. Now I would request Advocate Mr. Satpal Poswal, Advocate Mr. Rajveer Saradna and Advocate Mr. Sujan Singh Rana to kindly come towards the chief guest dais. The organizing team, please kindly arrange for all the mementos for the delegates who were not mentioned earlier. I would like to request all the delegates who have done their photographs and received their mementos to kindly move towards the pre-function area. Advocate Kapil Gurjar. A special request to all the speakers. Advocate Mr. Veer Gurjar, Advocate Mr. Yogesh Kumar Patel, Advocate Mr. Ranpa Lavana, Advocate Ms. Dimple Chaudhary, Ms. Romika Gurjar, to kindly come for a group photograph. All the speakers for session 2.
definitely. They're leaving, should I ask? Now, all the advocates and member delegates, advocates sitting on my left hand side, starting with Mr. Kartar Singh. Get their names all. Mr. Kartar Singh, please. Pre-function, मैं नहीं बोलती pre-function. अच्छा हाँ, please wait. Mr. Bharat would like to convey something. Let's have photograph and stay here. अरे sir, अरे बिल्कुल करें. आपने और अशोक जी ने फोटो खिंचवाए सर के साथ? Now I would like to hand over this mic to Mr. Bharat Bhushan Chaudhary sir. He would like to convey his regards and vote of thanks. Please. ये कौन है क्या कहाँ है एडवोकेट जगदीश प्रसाद गुर्जर, प्लीज़ आप भी जाइए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए अपना साहब. आप हमारे विशिष्ट अतिथि के साथ आप भी अपना क्लिक कराइए सर एक फ़ोटो. सभी से गुजारिश है प्लीज़ 2 मिनट के लिए. लास्टली एंड फाइनली, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में सभी लोगों का बराबर योगदान है, किसी एक से हो भी नहीं सकता था, और सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सबने पूरा योगदान दिया. इस इवेंट के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे जस्टिस साहब हैं, जो हमारी डिग्निटी है, डॉक्टर खारी को भी एक सम्मान बनता है, तो डॉक्टर खारी का सम्मान किया जाए. डॉक्टर खारी जी, डॉक्टर हर्ष खारी प्लीज़ सर, आपका मोमेंटो है वहाँ पर सर, आप जाओ ना, मोमेंटो दिलाओ सर. कोई मतलब नहीं सर, क्या कुछ नहीं किया जयपुर ने सर, ऐसे नहीं बोला जाता. क्या राजनीति बना रहे हो क्या उसको यार? मंच है सबका ही, जयपुर ने किया, सबने किया है. हाँ, डॉक्टर खारी के लिए आप बहुत ग्रेट अप्लाउज फॉर डॉक्टर खारी. मैं कहता हूँ अगर ये बिल्कुल इवेंट सक्सेस हुआ है तो इट्स क्रेडिट गोज टू द A.B.V.G.A.P एज वेल एज ट्राइबस लीगल. सो डॉक्टर खारी, वी आर सच ग्रेटफुल टू यू. All team members are, please. The team of Tribus Legal, please. Sabhi. And one is dash A.B.V.G.A.P की जो टीम है वो भी प्लीज वहीं पहुंचे. A.B.V.G.A.P के जो पीछे बैठे थे सारे के सारे वो वहीं पहुंचे. एक आपके साथ भी बनेगा उनका, हम लोग भी एक फोटो खिंचवाएंगे. A.B.V.G.A.P के सारे सदस्य. ये क्या नाम लिखा? Very thanks for everyone. Please sir, please. Dr. Khari, it's a great achievement and you have done a marvelous and outstanding job, sir. And we carry on in the future also. It is just assurance by the both Tribus Legal as well as A.B.V.G.A.P. May I request to the A.B.V.G.A.P, all members, participants, please join us. I am coming along. मेरा भी रह रहा सर अभी मेरा तो हुआ ही नहीं है. Yeah. Also, Advocate Jagdish Prasad Gurjar is also requested to please join. Sorry? Okay. Daulat Ram Khatana ji to also join the dais.
requesting Advocate Daulat Singh Khatana to kindly join our guests. Requesting all the dignitaries and guests to kindly proceed outside for high tea. Please join us for high tea. The chief guests and the guests of honor are requested to stay here for tea and snacks, while others are requested to move outside for high tea. Yeah.